अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एफआई एक्ट 1974 को अंडरस्टैंड करेंगे। पहले हम इस एक्ट के सेक्शंस को पढ़ेंगे, उसके बाद एफआई एक्ट से रिलेटेड पास्ट पेपर्स में जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आए हैं उनको समझेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हेल्प मी कंप्लीटिंग माई फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974, 8 of 1975। सो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ऑफ 1974 को 8 of 1975 भी कहते हैं, जिसे पास्ट पेपर में एमसीक्यूज आया कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 इज़ आल्सो कॉल्ड। सो इसमें ऑप्शंस थे लाइक 6 of 1975, 7 of 1975। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या था? 8 of 1975। उसके बाद है कि गेजेट ऑफ पाकिस्तान से कब पास हुआ? 17 जनवरी 1975 को गेजेट ऑफ पाकिस्तान से पास हुआ। पास्ट पेपर्स में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आया कि एफआई एक्ट 1974 प्रिंटेड इन द गेजेट ऑफ पाकिस्तान आर केम इनटू फोर्स ऑन। सो उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या था? 17 जनवरी 1975। उसके बाद नीचे एफआई एक्ट का प्रीएम्बल है कि इट इज़ एक्सपीडियंट to provide for the constitution of a federal investigation agency for the investigation of certain offences committed in connection with matters concerning the federal government। so वो offences जो commit किए जाते हैं in connection with matters of concerning federal government, so उसके लिए ये एजेंसी बनाई गई। इससे रिलेटेड पास्ट पेपर में एमसीक्यूज आया था कि द प्रीएम्बल ऑफ द एफआई एक्ट 1974 provides constitution of an agency for trial of certain offences, investigation of certain offences, inquiry and investigation of certain offences, and ऑप्शन डी में था all of these। सो बाकी ऑप्शंस गलत होंगे क्योंकि प्रियम्बल में लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेज कमिटेड इन कनेक्शन विद मैटर्स कंसर्निंग द फेडरल गवर्नमेंट। उसके बाद है एफआई एक्ट हैज़ वन शेड्यूल। सो एफआई एक्ट में एक ही शेड्यूल है। इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आया कि टोटल शेड्यूल इन एफआई एक्ट आर, so there is only one schedule in FIA Act 1974। उसके बाद है सेक्शंस ऑफ FIA Act 1974। सो टोटल 10 सेक्शंस हैं FIA Act 1974 में। FIA Act से रिलेटेड दो टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। एक तो डायरेक्टली सेक्शंस के नेम पूछे जाते हैं, दूसरा जो सेक्शंस के अंडर डिस्क्रिप्शन है वहाँ से भी एमसीक्यूज आते हैं। अभी ये 10 सेक्शन कौन से हैं? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, डेफिनेशंस, Constitution of the agency, superintendence and administration of the agency, powers of the members of the agency, power to amend the schedule, delegation of powers, indemnity, power to make rules and repeal। तो इन सेक्शन से डायरेक्टली एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। लाइक पास्ट पेपर में एमसीक्यूज आए कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट एक्सप्लेन इन विच सेक्शन? तो सेक्शन 1 में। एंड ऐसे भी एमसीक्यूज आता है कि सेक्शन 6 ऑफ एफआई एक्ट इज़ रिलेटेड टू, so it is related to powers to amend the schedule। so इन नेम्स को याद करने के लिए मैंने एक ये सेंटेंस बनाया, जो मेन जो वर्ड्स थे उनका फर्स्ट लेटर लेके ये सेंटेंस बनाया। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैन सपोर्ट पुअर पीपल डिस्प्लेस्ड इन पॉलिटिकल रियट्स। सो अगर हम इस सेंटेंस को याद कर लेते हैं तो हम सेक्शंस के नेम्स को ईजिली रिकॉल कर सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट जिसमें सेक्शंस के नेम्स में से एमसीक्यूज आते हैं, जहाँ से 40 to 50% आपके एमसीक्यूज सॉल्व हो जाते हैं, वो हमने कर लिया है। अब है कि उन सेक्शंस के अंडर डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ से भी एमसीक्यूज आते हैं। तो पहला जो सेक्शन है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला है कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट। इससे एमसीक्यूज आया पास्ट पेपर में कि दिस एक्ट डैश कॉल्ड द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सो ऑप्शंस थे मे बी कॉल्ड, शैल बी कॉल्ड और विल बी कॉल्ड। तो उसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट था? मे बी कॉल्ड। इसका सेकंड पार्ट है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड आल्सो अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड पब्लिक सर्वेंट्स वेयर एवर दे मे बी। तो इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो ओवरऑल पाकिस्तान पे है। एंड अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड पब्लिक सर्वेंट्स, जो पाकिस्तानी जो भी सिटीजन्स हैं आइदर दे आर आउट ऑफ द कंट्री और इन द कंट्री, उन पे ये लॉ एप्लीकेबल है। और पाकिस्तान के जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं तो उन पे भी ये एप्लीकेबल है, चाहे वो फॉरेन कंट्री के हैं पर पाकिस्तान में
सर्व करते हैं तब भी जो है उन पे ये लॉ एप्लीकेबल है। थर्ड पार्ट है इसमें, इट शैल कम टू फोर्स एट वंस। अब जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें से भी काफ़ी दफ़ा MCQs आए, लाइक MCQs आए, द एक्ट डैश द होल ऑफ पाकिस्तान एंड आल्सो अप्लाई टू ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें ऑप्शंस थे स्पेंस ओवर, एक्सटेंड्स टू, कवर्स। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान। इससे रिलेटेड और भी MCQs आए हैं जो हम MCQs वाले सेक्शन में उनको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद है डेफिनेशंस। सो 8 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनके डेफिनेशंस लिखे हुए हैं और इन डेफिनेशंस में से भी हर दफ़ा लाजमन जो है वो MCQs आता है। अब एजेंसी मीन्स द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, डायरेक्टर जनरल मीन्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी। अब इनसे रिलेटेड काफ़ी दफ़ा MCQ है, जैसे सेक्शन 2(1) से आया कि इन FIA एक्ट एजेंसी मीन्स द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एंड बाकी सारे भी ऑप्शन थे तो उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या था, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एंड सब सेक्शन 2 कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सो इससे रिलेटेड भी MCQs आया है कि कोड इन FIA एक्ट 1974 मीन्स सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पाकिस्तान पिनल कोड। तो इसमें कौन सा करेक्ट है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सो ये सेक्शंस लिखे हुए हैं और हर सेक्शन में से लाजमन एक MCQs आता है, तो आपको ये क्लेम कर लेने हैं। लाइक डायरेक्टर जनरल मीन्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ एजेंसी, प्रोविंशियल पुलिस मीन्स द पुलिस कंस्टिट्यूटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर द पुलिस एक्ट 1861, पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 21 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड एक्ट XL 5 of 1860 and includes an employee of any corporation or other body or organization set up, controlled or administered by under the authority of federal government. Special police means the Pakistan Special Police established constitution under the Pakistan Special Police Establishment Ordinance. And specified persons means the persons who were appointed to post in or under a provincial police in pursuance of Article 3 of Special Police and Provincial Police. And rules means rules made under this act. उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी में दो मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है फॉर इंक्वायरी इनटू एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल इंक्लूडिंग एन अटेम्प्ट और कंस्पिरेसी टू कमिट एंड अबेटमेंट ऑफ एनी सच ऑफेंस, एंड डायरेक्टर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अब इस सेक्शन में से MCQs कैसे आता है कि MCQs आया है पास पेपर में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी इज़ कंटेंड इन सेक्शन डैश ऑफ द एक्ट। सो कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 3 में। एंड उसके बाद पास पेपर में MCQs आया है FIA वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज एन एजेंसी टू कंडक्ट इंक्वायरी इनटू एंड इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन। तो उसमें ऑप्शंस थे लाइक पाकिस्तान पिनल कोड, द शेड्यूल इंक्लूडिंग एन अटेम्प्ट आर कंस्पिरेसी। सो एग्जैक्टली जो पार्ट सब सेक्शन 1 है यहाँ पे फॉर इंक्वायरी इनटू एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ, ये उठा के वहाँ पे पेस्ट किया गया है, तो ये ऑप्शन उसमें करेक्ट है। उसके बाद सेकंड है कि द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी टू बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। सो ये एग्जैक्टली यहाँ से MCQs पास पेपर में आया है। उसके बाद सेक्शन 4 है सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी। यहाँ से भी तकरीबन हर दफ़ा MCQs आता है कि सुपरिटेंडेंस ऑफ द एजेंसी किसके पास है, फेडरल गवर्नमेंट के पास है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी किसके पास है, डायरेक्टर जनरल के पास है। और डायरेक्टर जनरल के पावर्स किसके इक्वल होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और IG ऑफ पुलिस, जो IG पुलिस के पावर हैं अंडर पुलिस एक्ट 1861। सो इससे रिलेटेड पास पेपर में MCQs आया है सेक्शन 4 ऑफ द FIA एक्ट 1974 इज़ रिलेटेड टू। तो उसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी। एंड दूसरा MCQs आया कि द सुपरिटेंडेंस ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द, सुपरिटेंडेंस किसके पास होगा, फेडरल गवर्नमेंट के पास, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द डायरेक्टर जनरल। उसके बाद सेक्शन 5 ऑफ द FIA एक्ट पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी। सो एजेंसी के जो मेंबर्स हैं उनके पावर डिस्क्राइब किए गए हैं इस सेक्शन में। सो ये काफ़ी लेंदी था, इसको मैंने शॉर्ट करके जो मेन पॉइंट्स MCQ से रिलेटेड हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। इसमें सब सेक्शन 1 है
के पावर्स थ्रू आउट पाकिस्तान, उनके पावर्स जो है वो थ्रू आउट पाकिस्तान होंगे, ओवरऑल पाकिस्तान में। सर्च, अरेस्ट एंड सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये पावर्स भी उनके पास होंगे। ऑल अदर पावर्स ऑफ प्रोविंशियल पुलिस, सो इन पावर्स को छोड़ के बाकी जो प्रोविंशियल पुलिस के पावर्स, जो इन्वेस्टिगेटिव पुलिस है, जो उनके पास पावर्स होंगे वो सारे पावर्स FIA मेंबर्स के पास भी होंगे। और सबसेक्शन 2 में है कि सब इंस्पेक्टर के पावर जो हैं वो स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO पुलिस के पावर्स के इक्वल होते हैं। उसके बाद सबसेक्शन 3 है कि सब इंस्पेक्टर SI कैन अरेस्ट विदाउट वारंट व्हेन ऑथोराइज्ड बाय डायरेक्टर जनरल, सो सब इंस्पेक्टर जो है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है अगर उसको DG ऑथोराइज करता है। नंबर 4 पे है पुलिस स्टेशन इज़ एनी प्लेस जनरली आर स्पेशली डिक्लेयर्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, सो पुलिस स्टेशन कोई भी जगह हो सकती है जिसको जनरली आर स्पेसिफिकली जो है फेडरल गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर करे। उसके बाद है अ मेंबर में ऑर्डर इन राइटिंग नॉट टू रिमूव और ट्रांसफ़र अ प्रॉपर्टी विच इज़ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऐसा कोई प्रॉपर्टी जिस पे सस्पिशन हो, डाउट हो और सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो, तो इन राइटिंग जो है कोई भी मेंबर उसके रिमूव एंड ट्रांसफ़र को रोकने के लिए ऑर्डर कर सकता है। उसके बाद है कंट्रावेंशन ऑफ से सबसेक्शन 5 शैल बी पनिशेबल विद 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, अगर कोई शख्स सेक्शन 5 को फॉलो नहीं करता तो वो उसके लिए पनिशमेंट कितना है, 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है। इसके बाद है 5A का मतलब है अमेंडमेंट, सो सेक्शन 5 में अमेंडमेंट की गई, तो लास्ट में मैंने इसमें लिख दिया है 5A वाज एडेड थ्रू FIA एक्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2002, सो 2002 में ये अमेंडमेंट की गई। इसमें क्या चीज़ ऐड की गई, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कौन हो सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल एंड डिप्टी डायरेक्टर लॉ, ये दोनों जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हो सकते हैं। और पास पेपर में इससे रिलेटेड MCQs आए कि हु कैन बी डीम्ड टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, सो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल एंड डिप्टी डायरेक्टर लॉ, एंड ऑप्शन सी में था बोथ, सो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। एंड प्रोसीडिंग्स जो होंगे वो स्पेशल कोर्ट्स में होंगे, लाइक कन्वेंशनल नहीं, स्पेशल कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स कैरी आउट किए जाएंगे। आफ्टर दैट सेक्शन 6 इज पावर टू अमेंड द शेड्यूल, हु हैज़ द पावर टू अमेंड द शेड्यूल, द फेडरल गवर्नमेंट, सो शेड्यूल को अमेंड करने का पावर किसके पास है, उसमें अमेंडमेंट लाने का पावर है द फेडरल गवर्नमेंट के पास, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट, सो ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन के बाद जो है वो फेडरल गवर्नमेंट शेड्यूल को अमेंड कर सकता है। इससे रिलेटेड पास पेपर में MCQs आया है कि द फेडरल गवर्नमेंट में अमेंड द शेड्यूल ऑफ FIA एक्ट विदाउट नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट, बाय वर्बल डायरेक्शन, सो बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट ऑप्शन सही है। उसके बाद डेलीगेशन ऑफ पावर्स, द डायरेक्टर जनरल मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट ऑल आर एनी ऑफ हिज पावर्स टू एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी, सो डायरेक्टर जनरल अपने पावर्स किसको डेलीगेट कर सकता है, सो ही कैन डायरेक्ट हिज पावर्स टू एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी बट इन राइटिंग। उसके बाद सेक्शन नंबर 8 इंडेमनिटी, इंडेमनिटी मीन्स इम्यूनिटी, या किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल या कल्पेबल नहीं होना, लाइक बरी ज़िम्मा होना। नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शall lie against the federal government, any member of the agency or any other person exercising any power in good faith done under this act. So there will be no suit, prosecution or other legal proceeding against federal government, any member of the agency या कोई और शख्स जो पावर एक्सरसाइज करता है अंडर दिस एक्ट इन गुड फेथ। सो इससे रिलेटेड पास पेपर में एक MCQs है कि अकॉर्डिंग टू इंडेमनिटी क्लाज इन सेक्शन 8 द फेडरल गवर्नमेंट एंड द मेंबर ऑफ द एजेंसी आर लायबल टू लीगल प्रोसीडिंग्स एंड प्रोसिक्यूशन। ऑप्शन ए में है यस, बी नो, मे बी नन ऑफ दिस, दे आर नॉट लायबल टू लीगल प्रोसीडिंग्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है सेक्शन 9 पावर टू मेक रूल्स, सो रूल्स कौन मेक कर सकता है, द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक रूल्स बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट, सो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रूल बना सकता है बट इन
but by notification in the official gazette. कौन से rules? Following rules: terms and conditions of service of Director General and other members. So terms and conditions of service Director General के and दूसरे members जो हैं एजेंसी के, उनके लिए rules बना सकता है. Powers and functions of the members, extent and nature of assistance to provincial investigating agencies. Rewards may be given to the members of the agency or of the public for rendering commendable services. So इन पॉइंट से रिलेटेड जो है वो फेडरल गवर्नमेंट रूल्स बना सकता है. उसके बाद सेक्शन 10 है रिपील का. तो जब ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कुछ लाज थे वो रिपील हो गए. तो दो जो मेन लाज हैं वो रिपील हो गए. द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट 1948, द स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमलगेशन आर्डर 1962. So employees of above mentioned institutions had to express their willingness to serve in or under the agency within 30 days of the commencement of this act. So already जो ये laws repeal हो गए तो इनके अंडर जो employees काम करते थे उनको 30 days का टाइम दिया गया कि either they are willing to work under the new FIA Act or not. So 30 days का अल्टीमेटम उनको दिया गया था. So that's all about the sections of FIA Act 1974. पास्ट पेपर्स में जो MCQs मोस्ट रिपीटेडली आए हैं उनको देखते हैं. FIA Act means Federal Investigation Agency Act, Federal Inquiry Agency Act, Federal Investigative Agency Act, none of these. So इसमें करेक्ट ऑप्शन है A, Federal Investigation Agency Act. Federal Investigation Agency Act 1974 is also called 6 of 1975, 7 of 1975, 8 of 1975, 9 of 1975. So option C correct है, 8 of 1975. FIA Act 1974 printed in the Gazetteer of Pakistan on or came into force on 17th January 1975, 17th December 1975, 17th December 1974, 17th June 1975. So correct option is A, 17th January 1975. This act dash called the Federal Investigation Agency Act, shall be called, can be called, may be called, none of these. So option C is correct, maybe. The preamble of FIA Act provides constitution of an agency for trial of certain offences committed in connection with matters concerning the federal government, investigation of certain offences committed in connection with matters concerning the federal government, inquiry and investigation of certain offences committed in connection with matters concerning the federal government, none of these. So इसका correct option है B, investigation of certain offences committed in connection with matters concerning the federal government. Total schedule in the FIA Act is R. Option A 2, option B 1, option C 4, option D 3. So option B is correct, 1. Short title, extent and commencement explained in which section? Option A section 1, option B section 2, option C section 4, option D section 3. So option A is correct, section 1. The act dash the whole of Pakistan and also applied to all citizens of Pakistan and public servants wherever they may be. Spans over, extends to, covers, none of these. Option B is correct, extends to. Which of the following is correct? FIA Act is applicable to public servants. FIA Act is applicable to all citizens of Pakistan. FIA Act is applicable to all employees. None of these. Option D is correct.
none of these, because FIA Act is applicable to public servants as well as citizens of Pakistan. Which section defines it extends to the whole of Pakistan and applied to all citizens of Pakistan and public servants wherever they may be? Option A, Section 1, subsection 2, Section 1, subsection 3, Section 1, subsection 1, none of these. Option A is correct. Section 1, subsection 2. Which of the following section defines FIA Act 1974? It shall come to force at once. Section 1, subsection 2, Section 1, subsection 1, Section 1, subsection 3, none of these. Option C is correct. Section 1, subsection 3. Section 2 of Federal Investigation Agency Act 1974 is related to extent of the Act, definitions, jurisdiction of the Act, all of these. Option B is correct. Definitions of the Act. Section 2, subsection 1 is related to the definition of code, agency, federal government, provincial government. Option B is correct. Agency. In FIA Act 1974, agency means members of the FIA, Inter-Services Intelligence, Federal Investigation Agency, none of these. Option C is correct. Federal Investigation Agency. Code in the FIA Act 1974 means Civil Procedure Code, Criminal Procedure Code, Pakistan Penal Code, none of these. Option B is correct. Criminal Procedure Code. Under Section 2, subsection 2, code means the Code of Criminal Procedure 1898, Act 4 of 1898, Act 5 of 1898, Act 6 of 1898, Act 7 of 1898. Option B is correct. Act 5 of 1898. Section 2, subsection 3 is related to Code, Director General, Federal Government, Provincial Police. Option B is correct. Director General. Provincial police means the police constituted by a provincial government, the police other than Islamabad Capital Territory Police, the police constituted by Chief Minister of a province, none of these. Option A is correct. The police constituted by a provincial government. Article 2, subsection 4 related to provincial police means the police constituted by provincial government under the Police Act 1861, 6 of 1861, Police Act 1898, 7 of 1898, Police Act 1860, 5 of 1860, Police Act 1861, 5 of 1861. Option D is correct. Police Act 1861, 5 of 1861. Public servants means a public servant defined in section dash of PPC 1860. Option A 21, option B 22, option C 23, option D none. Option A is correct. 21. Public servants means a public servant defined in section 21 of the Pakistan Penal Code 1960, 1898, 1860, none of these. Option C is correct. 1860. The applicability of the FIA Act extends to employees of all corporations. Employees of all corporations set up or controlled by federal as well as provincial governments
employees of all corporations set up are controlled by or under the authority of federal as well as provincial governments? None of these. Option D is correct. None of these. Because correct option will be employees of all corporations set up are controlled by or under the authority of federal government only. Pakistan Special Police Ordinance was promulgated on 1947, 1948, 1949. None of these. Option B is correct. 1948. Special Police means the Pakistan Special Police Establishment Constitution under the Pakistan Special Police Establishment Ordinance 1948, 7 of 1948 under Section 2 subsection 4, Section 2 subsection 5, Section 2 subsection 6, Section 2 subsection 7. Option C is correct. Section 2 subsection 6. Under Section 2 subsection 7, specified persons means the persons who are appointed to posts in or under a provincial police in pursuance of Article 3 of the Special Police and Provincial Police Amalgamation Order 1860, 1898, 1942, 1962. Option D is correct. 1962. Specified persons means the persons who are appointed to posts are in under provincial police in pursuance of Article Dash of Special Police and Provincial Police Amalgamation Order 1962. Option A 3, B 5, C 4, D none of these. Option A is correct. 3. Rules means rules made under this act stated in Section 2 subsection 2, Section 2 subsection 4, Section 2 subsection 6, Section 2 subsection 8. Option D is correct. Section 2 subsection 8. The constitution of the agency is contained in Section Dash of the Act. Option A 3, B 4, C 5, D none of these. Option A is correct. 3. Federal Investigation Agency is constituted under Section Dash of FIA Act. Option A 7, B 5, C 3, D none of these. Option C is correct. 3. FIA was constituted as an agency to conduct inquiry into and investigate offences specified in Pakistan Penal Code in respect of the criminal offence but not for cases of civil nature. The schedule including an attempt or conspiracy to commit an abatement of any such offence. Crimes cognizable in violation of the law of the land or those in contravention of a jirga agreement. None of these. Option B is correct. The schedule including an attempt or conspiracy to commit an abatement of any such offence. The Director General of the agency to be appointed by the Prime Minister, Federal Government, President, none of these. Option B is correct. Federal Government. Section 4 of the FIA Act 1974 is related to superintendence and administration of the agency, power to amend the schedule, powers of the members of the agency, delegation of powers. Option A is correct. Superintendence and administration of the agency. The superintendence of the agency shall vest in the provincial and federal government, president, federal government, none of these. Option C is correct. Federal government.
The administration of the agency shall vest in the Interior Minister, Federal Government, Superior Court, Director General. Option D is correct. Director General. The Director General of the agency shall exercise powers of a dash under the Police Act 1861. Inspector General, Deputy Inspector General, Assistant Inspector General, none of these. Option A is correct. Inspector General. The powers of the Inspector General of Police are exercisable by the DG of FIA under which Act of Police? The Police Act 1861, the Police Act 1860, the Police Act 1898, none of the options. Option A is correct. The Police Act 1861. Section 5 of the FIA Act 1974 is related to superintendence and administration of the agency, powers of the members of the agency, power to amend the schedule, delegation of powers. Option B is correct. Powers of the members of the agency. The members of the agency shall have powers throughout Pakistan, in the designated provinces, specified areas, none of these. Option A is correct. Throughout Pakistan. The members of the agency shall have throughout Pakistan such powers, including powers relating to forceful entry into a roost of a criminal, search, arrest of persons and seizure of property, use of corporal punishment for investigation, all of these. Option B is correct. Search, arrest of persons and seizure of property. The members of the agency shall have throughout Pakistan such powers, including powers relating to search, arrest of persons and seizure of property is described in Section 5, subsection 1, Section 6, subsection 2, Section 7, subsection 4, Section 8, subsection 2. Option A is correct. Section 5, subsection 1. According to Section 5, subsection 2, a member of the agency not below the rank of a dash may exercise any of the powers of an officer in charge of a police station in any area of time being sub-inspector, inspector, assistant director, director. Option A is correct. Sub-inspector. An FIA sub-inspector holds the same authority as Inspector Police, IG, SHO, DPO. Option C is correct. SHO. Under Section 5, subsection 3, any member of the agency not below the rank of sub-inspector authorized by the dash in this behalf may arrest without warrant inspector, director, assistant director, director general. Option D is correct. Director general. Police station includes any place declared as police station, special only, general as well as special, locally only, none of these. Option B is correct. General as well as special. Arrest without warrant can be made by members of agency, Director General only, police only, none of these. Option D is correct. None of these. Because correct option will be members of the agency not below the rank of sub-inspector when authorized by Director General. A person arrested under the FIA Act may be detained at police station set up by police, any place declared as police station, both A and B, D, none of these. Option B is correct. Any place declared as
police station. An arrest under the FIA Act can be made after commission of an offence on reasonable suspicion of commission of an offence. Both A and B, D, none of these. Option C is correct. Both A and B. When property under investigation is apprehended to be transferred, an order to restrain its transfer may be made by federal government, member of the agency, Ministry of Interior, none of these. Member of the agency. Option B is correct. A member of agency may make an order for not transferring property under investigation verbally, in writing, both, none of these. Option B is correct. In writing. The contravention of order under Section 5 of FIA Act is punishable with rigorous punishment of 1 year, 2 years, 4 years, 3 years. Option A is correct. 1 year. Certain officers of the agency deemed to be public prosecutors stated in Section 3B, Section 5A, Section 9D, Section 7C. Option B is correct. Section 5A. Section 5A pertaining to certain officers of the agency deemed to be public prosecutors was added through FI Amendment Ordinance 1985, 1999, 2002, 2016. Option C is correct. 2002. Who can be deemed to be public prosecutor? Assistant Director Legal, Deputy Director Law, both A and B, none of these. Option C is correct. Both A and B. In any order, law for the time being enforce the Assistant Directors Legal and the Deputy Directors Law of the agency shall be deemed to be public prosecutors and shall be competent to institute and conduct any proceedings in cases sent up for trial the agency in the dash district court, high court, supreme court, special courts. Option D is correct. Special courts. Section 6 of the FIA Act 1974 is related to superintendence and administration of the agency, powers of the members of the agency, power to amend the schedule, delegation of powers. Option C is correct. Power to amend the schedule. The federal government may amend the schedule of FIA Act without notification in the official gazette, by notification in the official gazette, by verbal direction, none of these. Option B is correct. By notification in the official gazette. According to Section 6 of FIA Act, Dash has the power to amend the schedule. Director General, Federal Government, Prime Minister, none. Option B is correct. Federal Government. Section 7 of the FIA Act 1974 is related to superintendence and administration of the agency, powers of the members of the agency, power to amend the schedule, delegation of powers. Option D is correct. Delegation of powers. The Director General may order dash direct all of his powers to member of the agency in writing, court order, verbally, none of these. Director General can direct all his powers to any member of the agency in writing. Option A is correct.
Section 8 of the FIA Act 1974 is related to power to amend the schedule, delegation of powers, indemnity, power to make rules. Option C is correct. Indemnity. No legal proceeding shall lie against any member of the agency or any other person exercising any power or performing any function under this act in good faith done stated in Section 4 subsection 3, Section 6 subsection 2, Section 8, Section 10 subsection 3. Option C is correct. Section 8. According to indemnity clause in Section 8, the federal government and the members of the agency are liable to legal proceedings and prosecution. Option A, yes. Option B, no. Option C, maybe. Option D, none of these. Option B is correct. No. Section 9 of the FI Act 1974 is related to power to amend the schedule, indemnity, delegation of powers, power to make rules. Option D is correct. Power to make rules. The terms and conditions of service of the Director General FIA can be provided in the rules, cannot be provided in the rules, can be partially provided in the rules, none of these. Option A is correct. Can be provided in the rules. Rewards may be given for commendable services to members of the agency only, Director General only, members as well as public, none of these. Option C is correct. Members as well as public. Section 10 of the FI Act 1974 is related to repeal, delegation of powers, indemnity, power to make rules. Option A is correct. Repeal. Pakistan Special Police Establishment Ordinance Dash is repealed by FI Act 1974, 1948, 1958, 1968, none of these. Option A is correct. 1948. So that's all for today's lecture. I hope you found it helpful and informative. If you have any feedback or questions, please feel free to leave a comment. Also share this lecture with others who may benefit from it. Thank you for watching. Allah Hafiz.